Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you are fine in the best of your health and iman. Welcome to the second lecture of Cambridge Inspiring Science Grade 4. So in unit number 1, the chapter number 2 is Teeth and Digestion. Teeth or tooth is a hard structure found in the jaws of many vertebrates, and to break down food, the roots of teeth are covered by gums. टीथ दांतों को कहते हैं जो हमारे मुंह में होते हैं, हमारे जबड़ों में होते हैं. टीथ के ज़रिए हम लोग खुराक को छोटे छोटे पीसेस में तकसीम करते हैं. व्हाट इज़ डाइजेशन? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द फूड इनटू स्मॉलर पीसेस इज कॉल्ड डाइजेशन. खुराक को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करने को हम डाइजेशन कहते हैं. डाइजेशन मुंह से शुरू होके स्टमक तक जाता है और इस पूरे प्रोसेस को हम डाइजेशन ही कहते हैं. सो टीथ आर related to the process of digestion. So dear children, let's begin the reading. The first topic is our teeth. We all have a pair of jaws in our mouth. The upper jaw is fixed, but the lower jaw can move. Each jaw has a row of hard bone-like teeth. Together they form a complete set of teeth. So what do we learn here? We learn that we have a pair of jaw in our mouth. That means we have two jaws in our mouth. The upper jaw is fixed, that means it cannot move, but the lower jaw can move. As we are talking, we move our lower jaw and it helps us in speaking and eating as well. Each jaw has a row of hard bone like teeth. We read that in every jaw there are teeth, and as I told you earlier that teeth is a hard bone like structure, and together all these teeth together form a complete set of teeth. The next topic is how are teeth useful to us? They are asking us a question that how are teeth useful to us? What do you think? How are teeth useful to us? What do we do with the teeth? Yes, we eat with the teeth, and teeth help us to chew the food. Let's see what they are saying. Teeth give proper shape to our face. They also help us to speak properly, but most importantly, teeth help us to chew our food. Chewing breaks down the food into smaller pieces so they can be swallowed and digested easily. So as I told you earlier, students, that the digestion begins from the teeth. As we take the food, the teeth start grinding the food and it start cutting and chewing the food, and it breaks the food into smaller pieces. So after that the food is swallowed and then it goes to the stomach to be digested. Also, teeth give a proper shape to our face. You can imagine a person without teeth, or you maybe have seen older person without teeth or small babies without teeth. You see that their face has not a proper shape, and teeth help us to speak properly as well. So my dear students, हमने इसमें पढ़ा कि दांत हमारे किस काम आते हैं. तो दांत हमारे खुराक को चबाने के लिए काम आते हैं. हम दांतों के ज़रिए खुराक को छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर वो छोटे छोटे पीसेस हमारे लिए निगलना आसान होता है और हमारे मैदे के लिए उसको डाइजेस्ट करना आसान होता है. So the next topic is temporary teeth and permanent teeth. Let's read what are temporary teeth and what are permanent teeth. As you can see that temporary teeth, temporary means that does not stay for a long time, and permanent teeth means that stay for a long time. So let's read. When a baby is born, its teeth are not seen. Have you seen a baby? Did you see teeth when a baby is born in his mouth or her mouth? No, a baby has no teeth in its mouth. The baby has tooth buds inside the gums. The teeth start growing when the baby is about 6 months old. By the time the baby becomes 3 years old, it has a set of 20 teeth. This set of first teeth are called temporary teeth or milk teeth. So what do you learn here? That a baby has no teeth when it's born, but it has tooth buds inside its gum, and when the baby gets older, from time to time teeth starts appearing in the gums of the baby, and when the baby reaches 6 months old,
the teeth starts growing then, and when the baby is 3 years old, it has a set of 20 teeth, meaning that the baby has grown 20 teeth till he or she became 3 years old. These teeth are called temporary teeth or milk teeth because they are replaced by permanent teeth after a child is 7 or above years old. So my dear students, you have read in this paragraph कि जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसके मुंह में कोई दांत नहीं होते, बल्कि उसकी मसूड़ों में टीथ बड्स होते हैं. जब जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता जाता है, 6 महीने तक पहुंचता है, तो 6 महीने के बाद उस बच्चे के मुंह में दांत निकलना शुरू हो जाते हैं. उन दांतों को हम कहते हैं टेम्पररी टीथ या मिल्क टीथ. और जब वो बच्चा 3 साल का हो जाता है तो उसके मुंह में 20 टीथ होते हैं, जिसको हम टेम्पररी टीथ या मिल्क टीथ का पूरा सेट कहते हैं. आगे जब वो बच्चा बड़ा होता है 6-7 साल के बाद, तो फिर उसकी टेम्पररी टीथ जो है वो परमानेंट टीथ उसको रिप्लेस कर लेते हैं. लेट्स कंटिन्यू आवर रीडिंग ऑन पेज 10. When a child is about 6 years old, the next set of teeth starts appearing. The second set of teeth are called permanent teeth. As the permanent teeth grow, they push the milk teeth out. Children have 28 teeth. At the age of about 18 years, 4 more teeth start growing. These are called wisdom teeth. An adult has a full set of 32 teeth. 16 of these are on the upper jaw and 16 on the lower jaw. So what do we read in this paragraph, children? It's that when a child is about 6 or 7 year old, new teeth starts to appearing. These teeth are called permanent teeth. You earlier that temporary teeth are replaced by permanent teeth. So as the permanent teeth starts growing, the temporary teeth starts pushing out of the gum. So when a child is 18 years old, 4 more teeth starts growing. These teeth are known as wisdom teeth. What are they known as? Wisdom teeth. Yes, a full grown adult has 32 teeth in both of the jaws, in which 16 of these teeth are in the upper jaw and 16 is in the lower jaw. तो स्टूडेंट्स, हमने इस पैराग्राफ में पढ़ा कि जब बच्चा 6 साल से या इससे ज़्यादा एज का होता है तो परमानेंट टीथ निकलना शुरू हो जाते हैं और टेम्पररी टीथ गिरना शुरू हो जाते हैं. ये परमानेंट टीथ बच्चों में 28 होते हैं. फिर जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, 18 ईयर्स के होते जाते हैं हम, तो 4 और टीथ निकल आते हैं हमारे, और इन 4 टीथ को कहते हैं विजडम टीथ. और एक फुली ग्रोन एडल्ट जो होता है उसके 32 टीथ होते हैं. 16 अपर जॉ पे और 16 लोअर जॉ पे होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो हियर वी हैव, नाउ यू नो, एज यू हैव रीड द प्रीवियस पेजेस, you will be able to fill in the blanks. So let's read. Temporary teeth are also called dash teeth. What are temporary teeth called? Yes, we read it on page number 9, that temporary teeth are called milk teeth. Temporary teeth are called milk teeth. Yes, the second set of teeth is called dash teeth. What is the second set of teeth called? We have learned it on page 10 that temporary teeth are replaced by permanent teeth. Yes, so the second set of teeth is called permanent teeth. Then there is number of teeth children have are, how many teeth the children have? Yes, we read it on page 10, and children have 28 teeth. How many teeth does children have? 28 teeth. So let's read it again. Temporary teeth are also called milk teeth. The second set of teeth is called permanent teeth, and number of teeth children have are 28. Our next topic is types of teeth. All the teeth are not alike. They have different shapes. Their shape depends on their functions. The 4 teeth at the front of each jaw are specially made for cutting the food. They are called incisors. There are 2 pointed teeth, one on each side of the incisors. Their work is to grip and tear the food. They are called canines. The remaining teeth are flat, grinding and chewing teeth. They are called premolars and molars. There are 4 premolars, 2 on each side of the jaw. Behind these are the molars, which are broader than the premolars. There are 6 molars in each jaw, 3 on each side. So students, you may have noticed that every type of teeth is different. We have different type of teeth in our mouth.
You can check them now. You have to stand in a mirror and check your teeth. Your front teeth are different from your side teeth, and the back teeth are very much different from the front teeth as well. So let's read that what type of teeth are there in our mouth and what are they called and what is their function as well. So there are 4 teeth at the front of each jaw. You have 2 teeth in the upper jaw and 2 teeth in the lower jaw that are called front teeth, and their name is incisors. What are they called? Incisors, and they are used for cutting the food. Have you noticed that when you bite an apple, you bite it from the front teeth? तो हमने क्या पढ़ा इस पैराग्राफ में कि हमारे मुंह में जो 4 दांत हैं, जो सामने की तरफ है, 2 ऊपर और 2 नीचे, उनको इंसाइजर्स कहा जाता है और वो कटिंग के लिए यूज़ होते हैं, किसी चीज़ को कट करने के लिए यूज़ होते हैं, इसीलिए आपने देखा होगा कि ये क्वाइट फ्लैट है. ओके, द नेक्स्ट टीथ दैट आर close to the incisors are canine. They are pointed teeth and they are used for tearing and gripping the food. Canines are sharp teeth. As you can see that with incisors, and beside the incisors there are 2 canines on the upper jaw. These are called canines and they are used for tearing the food. On the lower jaw there are also 2 canines besides the incisors. तो हमने पढ़ा कि कैनाइन कौन से दांत होते हैं. कैनाइन जो हमारे इंसाइजर्स के साथ 2 पॉइंटेड टीथ होते हैं उनको कैनाइन्स कहा जाता है और ये खुराक को चीर पाड़ करने के लिए इस्तेमाल होते हैं. आपने देखा होगा कि जब आप गोश्त या कोई सख्त चीज़ खाते हैं तो आप कैनाइन दांतों का इस्तेमाल करते हैं बिकॉज ये पॉइंटेड है और ये शार्प भी होते हैं थोड़े से. द नेक्स्ट टीथ आर used for grinding and chewing the food, and they are flat teeth and they are called premolars and molars. There are 4 premolars and 2 molars on each jaw. Molars are broader than premolars and there are 6 molars in each jaw. तो हमने पढ़ा कि कैनाइन्स और इंसाइजर्स के बाद जो टीथ आते हैं जो हम एंड पे होते हैं हमारे जबड़े में, उनको कहते हैं मोलर्स और प्रीमोलर्स. प्रीमोलर्स जो कैनाइन के करीब होते हैं और मोलर्स जो एंड वाले दांत हैं जो प्रीमोलर्स से ज़्यादा चौड़े होते हैं और ये यूज़ होते हैं खुराक को च्यूइंग, खुराक को पीसने के लिए और उसको चबाने के लिए इस्तेमाल होते हैं ये दांत. ओके स्टूडेंट्स, वी हैव नाउ यू नो हियर अगेन and you have read the types of teeth, so you must be able to match the following. Let's read them. First are incisors. What are incisors? You have read it in this paragraph. What are incisors? Yes, incisors are the teeth used for cutting. You have to join one with C. Incisors are used for cutting. Okay, the second one is canines. Canines are used for, you have learned about canines. Canines are the sharper teeth beside the incisors and they are used for grip and tear. Yes, match the two with A, grip and tear. And the third one is molars. Molars are used to grind and chew. What are molars used for? Grind and chew. Match the third one to B. So dear students, let's move on to our next paragraph, that is the structure of a tooth. Teeth are fixed in the soft gums of the jaw. The part of a tooth which is outside the gum is known as the crown, while the part which is inside the gum is known as the root. The neck of the tooth is where the crown meets the root. Gums protect the bottom of the tooth including the root. The outer white part of the tooth is known as enamel. It is also the hardest part of the body. Dentin is the layer of our tooth. It is tough but not as much as the enamel. The pulp is the innermost layer of the tooth. It has blood vessels and nerves. Root is the sensory portion of the tooth containing the nerve which leads to the brain. The root also holds the tooth in place in the jawbone. Okay dear students, as you can see in this picture, the upper white part of the teeth is known as crown. You can see the crown. Yes, here is the crown. Then there is the root of the teeth. You can see that the root of the teeth are embedded in the gums.
Yes, it's embedded in the gum. And then the next part is the neck of the teeth. The neck of the teeth is the part between the crown and the root. Okay, the next part is enamel. As you can see the enamel, the layer below the crown is known as the enamel. Then there is dentin. Dentin is the soft part of the teeth. It comes after enamel. It has blood vessels and it is a soft part rather as compared to crown and enamel. And then there is pulp. Pulp has roots in the teeth, and these roots are connected with the brain. These nerves are connected with the brain. The teeth is the alive part. It's not a dead part of our body. It's alive part. It has blood vessels, and the blood vessels are connected to the brain. Then there is root. Root is a very sensory portion, and it also has the nerves that are leading into the brain, and this part holds the tooth in the jawbone. तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि जो टीथ का अपर लेयर है, ये जो आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, ये हमारी टीथ की रियल स्ट्रक्चर है. आपको तो सिर्फ ये ऊपर वाला हिस्सा नज़र आता है जिसको हम क्राउन कहते हैं, बट क्राउन से भी नीचे टीथ हमारा गम्स में एम्बेड होता है, वहाँ पर ये स्टक होता है. जो ऊपर वाला पार्ट है उसको क्राउन कहते हैं. क्राउन के नीचे वाले पार्ट को एनेमल कहते हैं. एनेमल के नीचे वाले पार्ट डेंटिन कहा जाता है. डेंटिन के नीचे वाले पार्ट को पल्प कहते हैं. जो पल्प है उसके अंदर जो नसें होती हैं वो दिमाग तक जाती हैं, और इसी तरह हमें अगर टूथ एक हो रहा होता है या अगर दांत में कुछ भी हो रहा होता है तो हमें फील हो रहा होता है. उसके बाद जो है वो आपके पास रूट्स है. रूट्स जो है वो सबसे बॉटम वाला पार्ट है, और जो क्राउन और रूट्स के दरमियान वाला पार्ट है उसको हम नेक कहते हैं. Moving on to our next topic, that is care of teeth. Many types of germs live in the mouth. Germs are tiny living things which cause diseases. They feed on the leftover food particles and give out a substance called acids. The acid damages the enamel. Slowly a hole called a cavity forms. The hole gets deeper in the tooth and reaches the dentine and then the pulp. The nerves in the soft pulp begin to pain. Then it is become difficult to chew the food. This causes indigestion. Okay students, so by far we read that how to take care of our teeth. First of all, we eat many kind of food, and there are many kind of germs that live in our mouth. These germs are living things, and also you know that germs causes many diseases. So when we eat food, some food are left in our teeth and it damages the enamel by releasing an acid. Slowly this hole called cavity gets deeper and deeper, and it reaches to the dentine, and then it reaches to the pulp, and then the soft pulp begin to pain, and this is called toothache. So toothache starts to begin, and then it is difficult for us to chew food on that teeth, and when we can't chew food, this unchewed food will get to our stomach, and it will lead to indigestion. सो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा कि जो हम खुराक खाते हैं उसकी छोटे छोटे ज़र्रात हमारे दांतों में फंस जाते हैं, और यही ज़र्रात आपको पता है कि हमारे मुंह में बैक्टीरिया और हमारे मुंह में जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के जर्म्स होते हैं, और ख़ुराक में भी मुख्तलिफ़ किस्म के जर्म्स होते हैं जो कि इन खुराक से एसिड रिलीज़ करते हैं. यही एसिड एनिमल को ख़राब करता है. टूथ का जो एनिमल और क्राउन होता है उसको ख़राब करता है और कैविटी प्रोड्यूस करता है. यही कैविटी जो है वो डीप होती जाती है, और डीप होते होते डेंटाइन तक पहुंचती है. डेंटाइन के बाद ये पल्प तक पहुंचती है, और जब ये पल्प तक पहुंच जाए तो फिर हमारे दांत में दर्द होना शुरू हो जाता है. फिर हम उस दांत से खुराक को च्यू नहीं कर पाते, और जब हम खुराक को च्यू नहीं कर पाते तो क्या होता है कि अनच्यूड फूड हमारे स्टमक में जाता है, और फिर हमें क्या होता है, हमारा हाजमा ख़राब हो जाता है और इनडाइजेशन होती है. इन द नेक्स्ट पैराग्राफ वी हैव कैविटीज कॉज पेन, bad breath and indigestion. A visit to the dentist becomes necessary in such cases. A dentist is a doctor who looks after your teeth. Students, we learn about dentist. Who is dentist? Dentist is a teeth who look after our teeth. So
Cavities cause pain, it causes bad breath, and it causes indigestion as well. So when there is cavity in our teeth, we visit the dentist, and in severe cases we may take our teeth out as well. तो स्टूडेंट हमने इसमें पढ़ा कि कैविटीज़ जो है वो दर्द पैदा करती हैं, बैड ब्रेथ पैदा करती हैं और हाजमा ख़राब करती हैं. तो जब इसी तरह कैविटीज़ हमारे दांतों में ज़्यादा हो जाती है तो हम दांतों के डॉक्टर के पास चेक करवाते हैं, जिसको हम डेंटिस्ट कहते हैं. तो डेंटिस्ट कौन होता है? वो डॉक्टर जो हमारे दांतों का ट्रीटमेंट करता है. लेट्स बिगिन द रीडिंग. आवर परमानेंट टीथ हैव टू लास्ट अ लाइफ टाइम. If they are damaged or lost, they do not grow again. So we must take good care of our teeth. Brush your teeth correctly and properly as shown in the pictures below. Dear students, you can see the pictures in your book. You have to brush your teeth like it's shown in the picture. First, you have to brush outside in circles and ups and downs, and then you have to brush inside up and down, and then you have to brush back and forth. Okay students, we learn in this paragraph that permanent teeth are going to be last for a lifetime. So if permanent teeth is damaged or lost, they do not grow again. So you have to be very much careful and taking care of your permanent teeth. You have to brush your teeth twice a day. You have to rinse your mouth. You have to brush correctly as it is shown in the pictures. There are some of the tips that are given to us for keeping our teeth clean, that are: do not forget to clean your tongue properly. Rinse your mouth after every meal. Do not eat too much of sticky food, sweets and soft drinks. Eat food that contains calcium and vitamin A, C and D. Foods like milk, cheese, fruits and green leafy vegetables are good for teeth. Apple and raw carrot are considered very good for teeth. Visit your dentist at least once in 6 months. सो डियर स्टूडेंट्स, हमने इस पैराग्राफ में पढ़ा कि जो परमानेंट टीथ होते हैं, अगर वो डैमेज हो जाए या वो उनमें कैविटी हो जाए और वो निकल जाए हमारे मुंह से, तो दोबारा परमानेंट टीथ नहीं उगते. इसीलिए आपको परमानेंट टीथ की बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर करनी है. हमें करेक्टली ब्रश करने का तरीका भी इन लोगों ने बताया इन पिक्चर्स. एज यू कैन सी, पहले पिक्चर में है कि आपको दांतों को बाहर से ब्रश करना है इन सर्कल्स, अप एंड डाउन, एंड देन आपको इनसाइड से ब्रश करना है अप एंड डाउन, एंड देन आपको बैक एंड फोर्थ से ब्रश करना है. फिर आपको कुछ टिप्स बताए गए हैं आपके ओरल हेल्थ के लिए, जो है कि आपने जो है वो अपने ज़ुबान को भी क्लीन करना है ब्रश के साथ. उसके बाद आपने अपने मुंह को अच्छे तरीके से धोना है. जब आप खाना खा लो फिर भी आपने कुल्ली करनी है और मुंह को धोना है. उसके बाद क्या है आपके पास कि आपने ज़्यादा स्टिकी फूड्स, ज़्यादा मीठा और सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं खाने, ये चीज़ें नहीं पीनी. उसके बाद आपने ऐसी चीज़ें खानी हैं जो कि कैल्शियम और विटामिन से रिच हो, जैसे कि विटामिन ए, सी और डी. ये तीनों विटामिन दांतों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे कि हमने यूनिट नंबर 1 में पढ़ा था कि फूड्स लाइक मिल्क, चीज़, फ्रूट्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर गुड फॉर teeth and bones. So teeth is also a bone like structure, so these kind of fruits are and vegetables are also good for teeth as well. So यहाँ पर आपको बताया गया है कि सेब और गाजर को कच्चा खाना भी हमारे दांतों के लिए बहुत ज़्यादा important है. So you must take proper diet to maintain your proper health. Okay, then there is the last one that you have to visit the dentist at least once in 6 months. कि आपको 6 महीनों में एक बार दांतों के डॉक्टर को ज़रूर चेकअप करवाना चाहिए. Our next topic is digestion of food. The food we eat is used by our body to get energy to do work and also for growth. But the food we eat cannot be used as it is. It has to be broken down into very simple soluble forms. This simple food can then dissolve in the blood and be carried to all parts of our body. This process of breaking down of food into simpler form is called digestion. Organs which help in digesting foods are called digestive organs. So students, we have learned in this paragraph what is the digestion of food. The food that we eat gives us energy, as we know that we eat food to get energy, and also we do work with this energy, and also we grow if we take good food. Then the food we eat cannot be taken like as it is to our body. It has to be broken down into smaller pieces. It has to be broken down into simple soluble pieces so that our body will be able to dissolve it. This food, this energy and the component in the food that we read in the unit number 1, our food is
that is taken by our blood. It is absorbed by our blood. So we cannot eat a food directly like this. We have to, our body have to break the food into smaller pieces, and this process is called digestion. And the organ that help in digesting food are called digestive organ. As we have read about mouth is also a digestive organ. तो स्टूडेंट्स हमने इसमें पढ़ा कि जो हम खुराक खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है और हम उससे ग्रो भी करते हैं, लेकिन खुराक हम ऐसे एज इट इज़ नहीं ले सकते, बल्कि उस खुराक को हमें छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना है, सॉल्युबल फॉर्म में डिवाइड करना है, क्योंकि हमने यूनिट नंबर 1 में पढ़ा कि जो फूड है उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स और वाइटामिन एंड मिनरल्स होते हैं, वो सारे हमारा ब्लड एब्जॉर्ब करता है। तो इन ऑर्डर टू बाय आवर ब्लड टू एब्जॉर्ब दिस फूड हमें इसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करना है, छोटे छोटे पीसेस में हमने इसको ब्रेक डाउन करना है। तो इस ब्रेक डाउन को, इस खुराक को छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउनिंग को कहते हैं डाइजेशन। और वो पार्ट्स, बॉडी के पार्ट्स, वो बॉडी के ऑर्गन्स जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं उनको डाइजेस्टिव ऑर्गन्स कहा जाता है। जैसे कि हमने माउथ के बारे में पढ़ा पीछे, तो माउथ क्या है? माउथ इज़ अ डाइजेस्टिव ऑर्गन। On page 13 we have, similarly the food that we eat does not dissolve in the blood directly. The starch in the rice or wheat changes into sugar during digestion. The sugar dissolves in the blood. As I told you earlier that this food must be dissolved in the blood, so it cannot be dissolved in the blood directly, but the starch in rice or wheat change into sugar during digestion, and this sugar is dissolved in the blood. The next topic is the process of digestion. Food is digested in the alimentary canal. The alimentary canal consists of the food pipe or esophagus, the stomach, the small intestine and the large intestine. So let's begin from in the mouth. The process of digestion begins in the mouth. Our teeth chew the food and break it into very small pieces. So student, here we learn about the process of digestion. The food is digested in the alimentary canal. Now what is the alimentary canal? The alimentary canal begins from the mouth and reaches to the stomach. It consists of esophagus. Esophagus is the food pipe in which the food is carried to the stomach, and then there is stomach. Stomach, as you know, is the main organ of digestion, and then the food is carried to the small intestine, and then it is carried to the large intestine. And the process of digestion begins in the mouth. As we take food in our mouth, the teeth start chewing the food and breaks it into very small pieces. From here the digestion begins. तो हमने पढ़ा कि फूड जो है वो डाइजेस्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल में। एलिमेंट्री कैनाल क्या है? जो हमारे मुंह से लेकर स्टमक तक जितने भी ऑर्गन्स है, खुराक जहाँ जहाँ से भी गुजरता है उसको एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, और जो खुराक मुंह से लेकर स्टमक तक पहुँचती है उसको कहते हैं फूड पाइप या एसोफेगस। और फिर हमारे खुराक स्टमक में जाती है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में। बट डाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है मुंह से। जैसे ही हम खुराक को मुंह में खाते हैं, लेते हैं, तो हमारे दांत उसको चबाना शुरू कर देते हैं और उसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, द फर्स्ट organ of digestive system is mouth, then there is pharynx, then esophagus, liver, stomach, gallbladder, pancreas, large intestine, small intestine, rectum and anus. All of these organs altogether form our digestive system. On the next page we have, as we chew, the saliva in our mouth mixes with the food. Saliva is a digestive juice used by the salivary gland in the mouth. The saliva converts insoluble starch into soluble sugar. So we learn that as we chew our food, there is a gland, that salivary gland, that secretes saliva. Liquid. It is a digestive juice that make our food soft and make it ready to be swallowed. तो जैसे ही हम खुराक को चबाते हैं, जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं हमारे मुंह में, जो लुआब के ग्लैंड्स होते हैं, उसमें से निकलता है लुआब, जो कि हमारे खुराक को सॉफ्ट कर देता है और उसको निगलने में मदद देता है। और सलाइवा जो होता है वो इनसॉल्युबल स्टार्च को सॉल्युबल शुगर में तब्दील करता है।
Then in the stomach, the food now enters the alimentary canal. It passes through the esophagus to the stomach. The stomach is a muscular bag. In the stomach, the food is churned and digestive juices are added. The food turns into a semi-liquid mixture. Here the proteins are broken into simple form. So what we learn here, that from mouth the food enters into the alimentary canal and it passes through the esophagus to the stomach. We learn about stomach that stomach is a bag. It is a muscular bag and it is full of digestive juices. When food enters here, food is churned here and digestive juices are added here, and then the food is turned into liquid mixture. And here the proteins are also broken down into smaller pieces, and the simpler form are called amino acids. तो हमने पढ़ा कि खुराक जो है वो स्टमक में जाता है. स्टमक में जब खुराक जाता है, व्हाट इज स्टमक? स्टमक इज़ अ मस्कुलर बैग. सो स्टमक इस इसोफेगस से स्टमक में खुराक जाता है और स्टमक फिर क्या करता है, यहाँ पर खुराक पे डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज़ करता है और खुराक से भी लिक्विड मिक्सचर बन जाता है और यहाँ पर प्रोटीन्स जो है वो अमाइनो एसिड में ब्रेक डाउन हो जाते हैं. इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, the mixture is pushed gradually into a long coiled tube called the small intestine. Some juices secreted by the small intestine are added to the mixture. The digestive juices from the liver and pancreas enter the small intestine and are added to the food mixture. The liver makes a digestive juice called bile. Bile helps to digest fats. The action of all these juices converts the food into different soluble substances. So what we learn here, that the food then enters in from stomach to the small intestine. The small intestine is a coiled structure. Here all juices are also secreted by the small intestine and are added to the liquid mixture that are sent by the stomach. So and also a digestive juice from the liver and pancreas also are secreted by the liver and pancreas on the mixture. Liver secrete a digestive juice that is called bile and it helps to digest fats. You have learned about fats in unit number 1 and you know that fats are not easy to digest. It is difficult to digest fats. So fats are digested by a digestive juice called bile, and all of these juices convert the food into different soluble substances that are soluble by the blood. तो हमने क्या पढ़ा कि स्टोमक से जो फूड होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है. स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? एक कॉइल्ड ट्यूब है. अच्छा, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो जूसेस सिक्रीट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से और वही जूसेस इसी मिक्सचर पे असर करते हैं. इसी तरह लिवर और पैंक्रियाज जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जूसेस सिक्रीट करता है इसी मिक्सचर के ऊपर. लिवर एक काइंड का जूस बनाता है जिसको हम कहते हैं बाइल, और ये बाइल फैट्स को डाइजेस्ट करता है. क्योंकि फैट्स को डाइजेस्ट करना इतना आसान नहीं होता तो उसको बाइल जो है वो डाइजेस्ट करता है और यहीं पर सारे जूसेस फूड को सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं जो कि ब्लड को अब्जॉर्ब करने में आसान हो. The next we have the blood vessels present in the walls of the small intestine absorb the soluble substances into the blood. The blood carries these to all the parts of the body. In the large intestine, the undigested food passes into another tube called the large intestine. Here water is absorbed from the undigested food. Whatever is left over is thrown out of the body through an opening called anus. So we read here that the soluble substances that are sent by small intestine, here in the small intestine there are blood vessels. These blood vessels have blood in them and the blood absorbs the soluble food and blood carries the soluble food to all parts of the body. Then the rest of the food that is undigested food that are left in the small intestine are sent to the large intestine, and here water is absorbed from this undigested food and whatever is left are thrown out of the body. हमने पढ़ा यहाँ पे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्लड वेसल्स होते हैं. यही ब्लड सॉल्युबल सब्सटेंसेस जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर उसको पूरी बॉडी में सेंड करते हैं, पूरी बॉडी को पहुँचाते हैं वो सब्सटेंसेस. फिर यहाँ से जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है. लार्ज इंटेस्टाइन वहाँ से पानी को अब्जॉर्ब कर लेता है और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको जिस्म से बाहर निकाल देता है एक ओपनिंग के ज़रिए जिसको हम एनस कहते हैं. तो स्टूडेंट, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम्स के बारे में क्या पढ़ा? लेट्स रिव्यू इट इन अ वेरी फन वे. आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, लेट्स सी व्हाट द स्टमक इज सेइंग टू अस. ओके, जो हम खुराक खाते हैं वो हमारी माउथ उसको च्यू करती है, हमारे टीथ उसको च्यू करते हैं, ग्रिंड करते हैं और फिर वही खुराक
हमारे उन खुराक में एनर्जी होती है जो कि हमारी बॉडी को बहुत ज़रूरी होती है। इसमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन हम डायरेक्टली इन फूड को नहीं खा सकते, हमें इनको लाजमी सॉल्युबल फॉर्म में लाना पड़ेगा ताकि हमारी इंटेस्टाइन और हमारी स्टमक उसको ईज़िली अब्जॉर्ब कर सके, ईज़िली डाइजेस्ट कर सके और ब्लड वहाँ से उसको ईज़िली अब्जॉर्ब कर सके। तो सबसे पहले द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनसाइड आवर बॉडी इज़ कॉल्ड डाइजेशन। हम जो भी खुराक खाते हैं ऑन डेली बेसिस उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स आपने यूनिट नंबर 1 में पढ़े हैं। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, फैट्स, प्रोटीन्स, ये सब कुछ आपने पढ़ा है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर होता है माउथ, स्टोमक, इसोफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारे। सबसे पहले माउथ है, फिर इसोफेगस, फिर लिवर, फिर गॉल ब्लैडर, स्टोमक, पैंक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन and rectum. Let's begin the process of digestion. So this is called our digestive system. These are the digestive organ. When food is taken through mouth, जब खुराक हमारे मुंह में जाता है तो हमारे मुंह में सैलिवरी ग्लैंड्स इसको सॉफ्ट कर देते हैं, फिर वो खुराक हमारे लिए निगलने में आसान होता है। जब ये खुराक फूड पाइप या इसोफेगस के ज़रिए स्टमक में जाता है तो स्टमक में मुख्तलिफ़ किस्म के डाइजेस्टिव फूड उस खुराक को ब्रेक डाउन कर लेते हैं। फिर ये खुराक वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। यहाँ पर लिवर और पेंक्रियाज से मुख्तलिफ़ किस्म के जूसेस निकलते हैं जो कि इस फूड को मज़ीद स्मॉल पीसेस में और सॉल्युबल फॉर्म में डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ से ब्लड वेसल्स इसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं। ब्लड वेसल्स में जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं और खुराक जो है वो पूरी बॉडी तक चला जाता है। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वहाँ से वाटर अब्जॉर्ब हो जाती है और फिर ये अनडाइजेस्टेड फूड हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। सो दिस वाज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। Okay dear students, so here we have, now you know again, as you have read this unit you will be able to fill in the blanks. The first one is food passes from esophagus to the stomach. Where do food passes from? Yes, food passes from esophagus to the stomach. Bile is produced by the dash. Bile is produced by the liver. Okay, saliva is produced by the salivary glands. Who produce saliva? Saliva is produced by the salivary glands. Let's revise them again. Food passes from esophagus to the stomach. Bile is produced by the liver. Saliva is produced by the salivary gland. Now moving on to the next topic, that is good eating habits. First of all, you have to eat a balanced diet. Then you have to eat your food at fixed times. Then you have to chew your food well. Do not be in a hurry. Then do not play as soon as you finish eating. Do not overeat. So dear students, we must adopt healthy eating habit, good eating habit, that are we have to eat a balanced diet. What is a balanced diet? You have learned it in the previous unit, that eating the right amount of food in the right quantity and the right food in the right amount is the balanced diet, and eating at the right time as well. And then there is you must eat your food at fixed time. You have to eat breakfast, then you have to do lunch, and then you have to have some snacks in the evening, and then you have to have dinner. Okay, then there is do not be in a hurry while eating. Chew your food well. Okay, you have not to do any physical activity when you eat as soon as you eat, but wait for a little while. And then you have to you do whatever you want. You play, you want to do exercise, you want to do any kind of physical work. Okay, do not overeat. You have to not overeat. You have to eat in a proper amount that is suitable for your health. So dear student, this was the end of the lecture. I hope you enjoyed reading it, and I hope you understood about the teeth and mouth and also the digestion in our body. And I hope you will eat and adopt healthy food habits. Till next time, take care of yourself. Allah Hafiz.